which has to be there in your overall thought and overall portfolio. So that's how SIP is important and how it can help us to create a wealth. So Vishal is there. Vishal is having like 17 years of experience in this industry. So 12 years with SBI, and prior to that he was with UTI. So we can get a good insight from him. So over to you, Vishal, and yeah, you can take it forward. Thank you, Divakar. Thanks, Omkar, for giving us this opportunity. A very warm welcome and a good morning from SBI Mutual Fund as well. Thank you for taking out time and attending this session. As Divakar rightly said about the SIP, I think today the way markets have been going on the one side direction, people have a lot of concerns कि पैसा कब लगाना चाहिए market के अंदर, क्या हमने rally miss कर दी है? But if you will ask me, markets are going to go up over the period of time, but there will be a lot of ups and downs. Whether the investor wants to be a part of their journey, the SIP is a solution. We don't want to miss the bus of equity. We should invest through the SIP over the period of time. That's where the SIP plays a very important role. As we see, I just एक छोटा सा पहले 2-3 मिनट लूंगा थोड़ा कंसेप्चुअली क्लियर करने के लिए म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड होते क्या है। SIP शुरू करने से पहले म्यूचुअल फंड कंसेप्ट है जिसमें ना इन्वेस्टर्स अपने पैसे लगाते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे SBI म्यूचुअल फंड हो गई, वो पूल ऑफ मनी कलेक्ट करती है। हमारा फंड मैनेजर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहे इक्विटी हो या डेट हो, और जो रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो इन्वेस्टर को पास ऑन किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वंस ही गेट्स अ रिडेम्पशन डन. So that is how the mutual fund work, but it is a combined vehicle for all the investors who have a same objective. And why the mutual funds are important, or what are the advantages of mutual fund? One, it is a professionally managed, because you have a fund. हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये नहीं जान पाते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक के अंदर हम डायरेक्टली पैसा लगाएं, हमें उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो एक प्रोफेशनली मैनेज फंड मैनेजर कर पाता है, बिकॉज उसका काम ही वही है, कंपनी से मिलता है, समझता है कि कंपनी की ग्रोथ क्या है। सेकेंड, इट इज द अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट अवेन्यू, जैसे कि आप 500 रुपए 1000 रुपए से भी एक SIP शुरू कर सकते हो। अगर आज मैं इन्फोसिस का या आयशर मोटर का या फिर पेज इंडस्ट्री का स्टॉक खरीदना चाहूं तो शायद मेरे वो बजट के बाहर जा रहा हो, बट अगर मैं म्यूचुअल फंड खरीदूंगा वो स्टॉक भी मैं खरीद लूंगा इन द सेम वे जो परसेंटेज के अंदर वो पोर्टफोलियो में है। थर्ड, रिड्यूस कर देता है रिस्क को, बिकॉज वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर देता है। आप एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हो, मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो डाइवर्सिफाई हो जाता है आपका पोर्टफोलियो रिस्क ऑल्सो। एंड फोर्थ, इट फॉल्स अंडर द इकोनॉमी ऑफ स्केल्स, कि आपका है ना कॉस्टिंग जो है नॉर्मल इन्वेस्टर बहुत ही कम हो जाती है, which helps you to reduce on the cost also. Fifth, it is and most important that any investment which we do, we always want the liquidity on the higher side. That is one of the reason कि इन्वेस्टर्स हमेशा सोचते हैं कि हम है ना FD में पैसा लगा दें, कि हम FD ब्रेक कर देंगे, इक्विटी में कभी हमें लिक्विडिटी मिले ना मिले। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है ना जहाँ आपको लिक्विडिटी बहुत ही आसानी से मिलती है। 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं जिस दिन आप विड्रॉवल रिक्वेस्ट देते हैं, जिसे हम रिडम्पशन बोलते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, इट्स स्ट्रांगली रेगुलेटेड बाय अ सेबी। जैसे बैंकिंग RBI से रेगुलेटेड है, कैपिटल मार्केट सेबी रेगुलेट करता है, एंड सेबी इज वन ऑफ द इन्वेस्टर फ्रेंडली रेगुलेटर। कंसेप्चुअली क्लियर कर देते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जो म्यूचुअल फंड में हम बात करते रहते हैं, कई बार आप लोगों ने टीवी न्यूज पे देखा होगा कि ये लार्ज कैप स्टॉक है, ये मिड कैप स्टॉक है। म्यूचुअल फंड के अंदर एक डेफिनेशन है, टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप होती हैं। 101 से लेके 250 कंपनी जो बाद वाली होंगी वो मिड कैप होंगी। 250 के बाद जो कंपनी आती है वो पूरी की पूरी स्मॉल कैप होती है। So, ये एक छोटा सा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, नहीं मार्केट में उस कंपनी की कितनी वैल्यू है। जैसे आप एक एग्जांपल लगा लें, HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है वो 12 लाख करोड़ की कंपनी है। So that is an market capitalization of that company. It falls under the large cap. इसी हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे जो हम बात कर रहे हैं, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
जिसका हमने कई बार हर जगह पे सुना होगा चर्चा, कि इसके जरिए हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, हमारे सारे सपने पूरे कर सकते हैं। बट सबसे पहले वेल्थ क्रिएट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, हर एक इन्वेस्टर की एक लाइफ साइकिल होती है, जिसके अंदर है ना उसके कुछ गोल्स होते हैं। अब वो गोल्स जो होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सबसे पहले एज ए इन्वेस्टर वी शुड नो अवर गोल्स। जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोगों को एक होता है कि हम एक गाड़ी खरीद लें एक नेक्स्ट 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर, या एक कहीं हॉलीडे मनाने जाना है, घर खरीदना है, या फिर बच्चों की शादी, बच्चों का एजुकेशन, या सबसे इम्पोर्टेंट गोल जो कहते हैं रिटायरमेंट, वो करना है। ये सारे के सारे हमारे गोल्स होते हैं लाइफ के, जिसको हम अलग अलग पीरियड्स में ब्रेक कर सकते हैं, और उसी हिसाब से हमें है ना हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी चाहिए, उस गोल को अपने सामने रखते हुए कि इस गोल को हम 5 साल में पूरा करना चाहेंगे। ये रिटायरमेंट, मुझे 60 साल में रिटायर होना है, मेरे पास 30 साल है, तो 30 साल तक मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अकॉर्डिंगली वी कैन सिलेक्ट द फंड, और एसआईपी के जरिए हम वो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और वो गोल अचीव कर सकते हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मेरे स्लाइड में सामने आप लोग के स्क्रीन पे दो चीजें आ रही होंगी। हमने गोल्स के बारे में बात करी, बट ये दो चीजें जो दिखा रहा है वो सबसे अहम रखना होता है जब हम अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं। जैसे कि सन 1993 और सन 2023 के बारे में मैंने कुछ यहाँ पर स्क्रीन पे डाला हुआ है। दो टाइप के दुकान है, एक जो हमारा नॉर्मल किराना दुकान हुआ करता था सन 1993 में, और एक है जो आज 2023 में जिसे हम मॉल कहते हैं। दोनों काम वही करते हैं, बट डिफरेंशिएशन है कि एक जगह पे आपको एस्पायरेशन चीजें मिल जाती हैं, आप एक ही जगह पे बहुत सारी शॉपिंग कर पाते हैं, और किराने की दुकान पे जब हम जाते थे तो हम अपने जरूरत की चीजें लेके आ जाते थे। बट जो एक चीज नहीं बदली है, हमारे 30 साल में डिफरेंशिएशन हमने देखा बाइंग के बारे में, बट जो एक चीज नहीं बदली है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो ये महंगाई भत्ता होता है। हर आए दिन महंगाई भत्ते की रिपोर्टें आती रहती हैं। टुडे इफ वी टॉक अबाउट टोमेटो प्राइसेस which has reached up to 150 rupees per kg. Now when we talk about inflation, उसके वजह से आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या ओवरऑल इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आता है। और इन्फ्लेशन जो है, अगर हम पिछले 30 साल का डेटा निकाल के देख लें, ये एक स्टैग्नेंसी पे रहा हुआ है, 6% से 7% के बीच में एवरेज बना के चलता है। कभी कभी 4.5-5 पे भी आता है, कभी 8 पे भी जाता है, बट एवरेजली आप 6 से 6.5% के आसपास इन्फ्लेशन को जरूर देखेंगे ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज वेयर वी ऑलवेज फाइंड कि जो इन्फ्लेशन की वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं, चाहे वो आपका खाने की चीज हो, रोजमर्रा की जिंदगी हो जैसे पेट्रोल हो, या एजुकेशन हो, ये सारी चीजें महंगी होती जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले लें, एक ब्रेड 2000 में वो 10 रुपए की हुआ करती थी, आज 45 की है, और 2030 तक अगर हम इन्फ्लेशन 6% से भी पकड़ लें तो अज्यूमिंग करते करते 57 रुपीज तक पहुंच जाएगा। वही हिसाब से पेट्रोल ऊपर जा चुका है। ये सारी जरूरत वाली चीजें हैं। बच्चों की एजुकेशन, अब बच्चों की एजुकेशन जब हम बात करते हैं, या हम हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं, एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस 6% 7% पे नहीं ग्रो करते, उससे कई ज्यादा इन्फ्लेशन होती है एजुकेशन की और मेडिकल एक्सपेंसेस की। सो समवेयर आई थिंक टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमारे गोल्स में हमने क्या देखा, एक देखा रिटायरमेंट, एक देखा बच्चों की एजुकेशन भी। लंबे समय के लिए अगर हम वो चीजें देखते हैं तो उस हिसाब से उनका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी उस चीज पे उतना ज्यादा आएगा। सो अकॉर्डिंगली हमें जो आज अगर एजुकेशन में 40 लाख रुपए में कोई डिग्री करवा रहे हैं कोई अपने बच्चों को, तो वही चीज आज से 20 साल बाद उसका 40 लाख नहीं लगेगा। उस चीज का एटलीस्ट आप हिसाब लगा लीजिए, हो सकता है 1 करोड़ 90 लाख उस रेंज में pricing बढ़ जाएगी। So somewhere I think investor has to keep in mind those things considering the investment along with inflation as well. That is where the inflation impacts a lot over the period of time, and where you see ki value of money gets reduced. So today if I am talking about a monthly expenditure of someone's house, it's around say 50,000 rupees. Over the period of 20 years, the same inflation will impact that expense and it will become almost like 2.5 lakh rupees.
सो डेफिनेटली मुझे उसी हिसाब से प्लानिंग करनी होगी कि 2.5 लाख रुपया हर महीने मुझे इंटरेस्ट पे मिले, और उस हिसाब से मुझे अमाउंट एक्यूमुलेट करना होगा जो हम इन्वेस्ट कर सकें। अब ये चीज से डरना नहीं है, इन्फ्लेशन रहेगा, हमेशा ही रहेगा, बट उसको ओवरकम कैसे किया जाए उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी जिसे हम कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा एसआईपी, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये होता क्या है? सबसे पहली चीज हम देखें तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो होती है उसके लिए सबसे पहले एक पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। हम रातों रात है ना कोई भी चीज में है ना लाखों रुपए करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते। हम है ना उसको पेशेंस देना होगा। वी नीड टू कीप अ पेशेंस फॉर ऑल द थिंग्स व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, we can see a screen where there are beautiful monuments. We talk about these are the 7 wonders of the world. Whether we talk about Colosseum, it took 8 years. Christ the Redeemer, it took 9 years to complete. Great Wall of China, it took 20 years to complete the construction. Our very own Taj Mahal, it took 22 years. And the next two, it took almost 30 years and 150 years to complete. These are the wonders of the world. They are the beautiful places. बट ओनली थिंग इज इनको बनाने में इतना समय लगा, और समय की जब हम बात करते हैं तो वो बनाने के टाइम पे पेशेंस डेफिनेटली लगा है। और वही चीज हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी होती है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वही इन्वेस्टर सक्सेसफुल होता है जो पेशेंस से इन्वेस्टेड रहता है। और एसआईपी से बेटर कोई और इन्वेस्टमेंट अवेन्यू नहीं होता जिसमें आप अप्स एंड डाउन्स भी मार्केट के देखते हैं बट आपको कभी दुख नहीं होता, बिकॉज आपका सेफ्टी ऑफ मार्जिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होता जाता है। सबसे पहली चीज एसआईपी में जब हम बात कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एसआईपी में जो कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो होता है वो होता है कि आप इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करते रहते हैं। मार्केट जो है सेंसेक्स वो तो अप्स एंड डाउन दिखाता रहेगा। मार्केट के अंदर कई बार जर्नी आएगी जहां पर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स का। अगर हम मार्केट का हिसाब उठा के देख लें, सेंसेक्स सन 1980 में एक 100 पॉइंट से चालू हुआ था और आज हम लोग है ना 65,000 के लेवल पे बैठे हुए हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड मार्केट कितनी बार ऊपर नीचे चढ़ाव किया। जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था तब मार्केट क्रैश किया, जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तब मार्केट क्रैश किया था, जब ग्लोबल मार्केट पूरा का पूरा डाउन हुआ था सन 2008 में सब प्राइम क्राइसिस की वजह से 60% मार्केट डाउन हुआ था, तब मार्केट ने क्रैश किया। और अभी रिसेंटली भी अगर हम देखें तो कोविड के वजह से 35 से 40% मार्केट करेक्ट हुआ था। बट जो एसआईपी में इन्वेस्ट करता है उसको ये सब चीजों का टेंशन होता ही नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट करेक्ट हो भी रहा है तो उसको नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो भर के मिल जाते हैं। और यही चीज आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करता है कि अलग अलग महीने में जब आपका पैसा डेबिट होता है अकाउंट से और इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड के अंदर, आपका एवरेज आउट होना चालू हो जाता है। कभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी अलॉटेड, विल बी रिड्यूस्ड। बट इफ द मार्केट इज गोइंग डाउन you will get more number of units which will help you to increase your portfolio valuation and over the period of time। जैसे हमने देखा कि मार्केट स्टैग्नेंट तो रहेगा नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद तो ऊपर जाना ही है, कभी ना कभी तो ऊपर भागेगा ही। मार्केट इसी लेवल्स पे तो रहेगा नहीं। द वे इंडिया इज ग्रोइंग वी विल बी सीइंग अ गुड अमाउंट ऑफ अपसाइड over the period of time. So SIP gives an opportunity for an investor to average out the cost of investment, being there is an ups and downs in the market। और ups and downs market में हमेशा रहेंगे। It is like your ECG। जैसे इन्वेस्टर हम लोग ECG करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, ऊपर नीचे देख के makes feel कि हम जिंदा हैं, but it can't be flat, right? So in that same way market has to be an volatile, and market will give an opportunity for an investment to all the investors who have a patience, who have a long term view to be invested। This is a first important benefit of an SIP, which is rupee cost averaging। When I look into it, there is another benefit also which brings in discipline of investing। Many a times we have seen people that they take the salary income and they start spending across on left, right, center। But what happens actually, they forget the most important critical thing which is called saving। So जब आप SIP रजिस्टर कर देते हो वो बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। तो नॉर्मली एक फंडा होता है जो आजकल हम बात करते हैं, आज की जनरेशन ये बात करती है कि इनकम माइनस
एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। बट आइडियली जो सिनेरियो होना चाहिए वो होना चाहिए इनकम माइनस सेविंग, विच इज एन प्री डिफाइंड सेविंग। जो बचा उसमें से आप एक्सपेंडिचर करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जरूरत की चीजें ना लें, बट हाँ डेफिनेटली एक इनकम के अंदर सेविंग का पोर्शन डेफिनेटली एक बना के चलना जरूरी है, सो दैट जो आप आज 1 रुपया जमा कर रहे हो वो आगे चल के आपको 10 रुपया बना के देगा, आपके अगले समय के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। सो दैट इज समवेयर आई थिंक helps an SIP investor to have an habit of saving, which brings in financial discipline. Thirdly, when we look into it, it eliminates the risk of timing. बहुत सारे इन्वेस्टर आके ये सवाल करते हैं हमसे कि है ना सर मार्केट आज है ना तेजी में ऊपर है तो क्या मैं मार्केट के अंदर पैसा लगाऊं, या मार्केट आज करेक्ट हो गया है तो क्या मैं पैसा लगाऊं। यानी आप मार्केट के अंदर टाइमिंग करना चाहते हो। बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इन द लास्ट 30 years और 25 years हमारे पास डेटा है, हमने ये चीज जरूर देखी है कि आप है ना कभी भी मार्केट को टाइमिंग नहीं कर सकते हो। यू कैनॉट टाइम द मार्केट टू जनरेट द रिटर्न्स, you can only be in the market. That means आपको invested रहना होगा उस समय के लिए, so that आप एक अच्छी wealth create कर सकें। अगर हम हमारे स्लाइड में सामने देखें स्क्रीन पे, मार्केट ने अप्स एंड डाउन्स हर 1 साल के बाद 2 साल दिखाया है, कहीं ना कहीं 3 साल कंटिन्यूस अच्छा हुआ है, फिर 1-2 साल खराब हुआ है। सो कहीं ना कहीं जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हमें कभी पता नहीं चल सकता कि हम मार्केट में कब इंटर कर पाए। हो सकता है हमारी एंट्री लेवल 2007 के दिसंबर की और 2008 में 60% मार्केट नीचे चला गया हो तो मेरा तो पूरा पोर्टफोलियो रेड में आ गया। बट बीइंग एन इन्वेस्टर, इफ आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, if I continue being invested over the period of time, that's a timing which will help and create a wealth for me and for my investors also. That is most important thing in an investment journey, because कई बार होते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर आके ये पूछते हैं कि सर मैं 7 तारीख का डेट ले लूं एसआईपी का, क्या मैं 15 तारीख का। हमने एक एनालिसिस करी थी इस चीज पे कि मार्केट महीने के अंदर सबसे डाउन कब था, सबसे अप कब था, और एक पर्टिकुलर डेट लिया था, और इसका हमने लास्ट 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला कि उसका टोटल रिटर्न्स कितना बना इन्वेस्टर का। सरप्राइजिंगली एवरीबडी मेड द सेम काइंड ऑफ एन रिटर्न्स। इट वाज लाइक एन 14.5% काइंड ऑफ एन रिटर्न। सो देयर वाज नॉट मच ऑफ द डिफरेंस कि आप डाउनसाइड के टाइम पे आओ, अपसाइड में आओ, या आप रेगुलर कोई भी एक डेट पे आओ। द इम्पोर्टेंट थिंग इज आप कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, और जितने समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहोगे उतना आपका कंपाउंडेडली इम्पैक्ट आएगा आपके पोर्टफोलियो पे। हम सब चाहते हैं कि एक रिटायरमेंट के हिसाब से हम कॉर्पस बनाए, बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से बनाए। सो दीज ऑल कैन बी डन ओनली बाय बीइंग इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। This is what I was talking about. Staying invested is more important than timing the market. We have taken an example of different individuals, somebody who invested at the bottom or on the top, or somebody who invested with a particular dates. Everybody has made money in the same range almost, which is almost like 13% kind of an. So there is nothing like an मैंने सिर्फ मिस्टर ए ने मिसेस ए ने एट द बॉटम में ही पैसा लगाया तो उन्होंने ज्यादा रिटर्न्स बनाए, तो कोई ऐसा एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं बनता है। जितना समय आप ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हो उतना ज्यादा आप पैसा बनाते हो। That is a third important benefit which SIP teaches while we are invested in the market. Fourth one, when we look into it, is the power of compounding. अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमने एक चीज जरूर देखी पेशेंस में कि हमारे 7 वंडर्स हैं वर्ल्ड के अंदर। Albert Einstein, which is one of the greatest knowledgeable person, he was a physician, he won so many accolades. He was a person who gave an 8th wonder to the world, which is called as an compounding. Now when we talk about an power of compounding, कई बार हमें ना power of compounding है ना बहुत ही एक छोटी सी चीज लगती है, because हम उसको 1 साल 2 साल 3 साल के हिसाब से देखते हैं। Longer the period, if somebody has been invested, he creates a wealth over the period of time. जैसे हमारे स्लाइड में हम देख रहे हैं कि एक इन्वेस्टर जो सिर्फ 10,000 रुपए हर महीने लगाता है, पैसा निवेश कर रहा है, और आने वाले 30 साल तक वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने टोटल मिला के एक 36 लाख रुपए इन्वेस्टेड किया है, बट जो वेल्थ क्रिएट हुआ वो कहाँ क्रिएट हुआ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 20 इयर्स के बाद। 20 इयर्स तक जब हम देख रहे हैं तो उन्होंने है ना जो इन्वेस्टमेंट किया उसका एक छोटा सा अमाउंट, एक
ग्रोथ फैक्टर करके दिख रहा है, but over the period of time when we are seeing the compounding principle helps in the end of the period, because that is where your goal is getting achievable, you are reaching your goal over the period of time, और वहां आपका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, बिकॉज बेस जो अमाउंट जमा हो चुका होता है सेविंग हैबिट की वजह से, वो आपको है ना एक अपर हैंड दे देता है। अगर आप यही चीज 1 साल 2 साल के हिसाब से देखेंगे तो आपको कहीं पर भी है ना इतना ज्यादा इम्पैक्ट दिखता नहीं है। दैट इज वेयर वी ऑलवेज फाइंड दैट कंपाउंडिंग plays a most important role for any investor, but it helps only while creating a wealth if you are staying invested for a very long period of time, which can be 15 years 20 years, because जो आपका actual 50% generation of the wealth होता है आखिरी के 5 साल 8 साल के अंदर ही हो जाता है। That is most important thing. This is how we talk about the compounding or a cost of delay. You can say the cost of delay because there are the investors who start their investment journey with a different age group. Now, when we look into it, there are the 3 examples which we have taken. We have taken names like Sunita, Dinesh, and Sanjay. They started investment journey at a different stage. Sunita, being a very smarter, she started taking an investment journey from the 25 years of her age. She only invested 5,000 rupees per month till the age of 60 years. And looking at the corpus at the 12% assuming returns, she was able to generate the corpus or create the corpus of 3.25 crores. And on the other side, when we look into it, Dinesh, who just started journey 10 years late than Sunita, he also invested 5,000. The returns were almost same. Amount wise अगर आप देखें तो उन्होंने सिर्फ 6 लाख रुपए कम लगाए हैं। साल का एक 60,000 रुपए, 10 साल का 6 लाख रुपए उन्होंने कम लगाया है, बट जो डिफरेंशिएशन अमाउंट आया है that is almost like 2.25 crores, which the Dinesh has not been able to create the wealth what Sunita has got additionally as against Dinesh. And if I look into it, 10 years more delay which Sanjay has done, Sanjay has invested almost you can assume 9 lakh rupees against the Sunita where she had invested 21 lakhs, सिर्फ 12 लाख कम लगाए हैं, बट आपको कितना रिटर्न्स कम मिला है? 3 करोड़ रुपए। सो हम यहाँ पर जो बात करना चाहते हैं वो है बेसिकली कंपाउंडिंग प्लेज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, बट फॉर कंपाउंडिंग an investor has to start a journey at the earliest, because when you are talking about your goals, which can be a long term goal of child education, marriage, or we talk about buying a home or a retirement, which is the most critical. Unfortunately, many of us, many Indians don't find that time or opportunity to create a wealth for their retirement, but SIP helps to do that. SIP solves to do that problem as well. This is what the same slide of cost of delay or compounding, if you compare over the period of time, happens when somebody take it very seriously, the investment portion, he can start investing at the earliest. And most importantly, SIP helps to achieve the goal with a well-planned manner. When we are talking about well-planned, we have a lot of options in terms of an different risk appetites, which definitely HDFC team will help us individually when we are talking to them, so that they can guide and make our portfolio properly according to the alignment of our goals, according to the alignment of our risk analysis. They can suggest us, and this investment is a most flexible manner. When I say flexible manner, you can start your investment journey with as low as 500 rupees, 1000 rupees, and you can increase over the period of time. And most importantly, in mutual fund, it's not like any other investment avenues where if there is an withdrawals or any kind of an penalties are implied on that. In mutual fund, we have only one thing which is called exit load, which is only for the period of say 1 year maximum on selective funds, and other funds where less than 1 year. But the redemption when it is coming to us, it is given in T+2 days, and most importantly, the liquidity is on the basis of an returns which are shown on the screen itself. So there is no kind of an penalty which is implied on the portfolio of an investor. But आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारी चीजें सिर्फ SIP तक सीमित नहीं रही है, तो हम अपने क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि आप है ना अपना गोल जो आप 50 साल 55 साल तक अज्यूम कर रहे थे अचीव करने का, why not to achieve much faster, because everybody wants to be a financial free at the earliest. We wanted financial independence, freedom, independence.
So somewhere I think that note which everybody is talking about in the recent time, we have initiated and implemented one of the new concepts which is called an step up or top up SIP as well. Top up SIP में क्या होता है कि it's basically makes your goal achieve in a much faster way. And what happens normally, people start their investment journey. Say suppose विशाल ने आज है ना अपना investment journey चालू किया with 5,000 rupees SIP. अब अगले साल विशाल जो जॉब कर रहा है उसमें उसको इंक्रीमेंट तो मिल रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना भूल गया, और वही चीज कंटिन्यूसली उसके 5 साल तक चल रही है, 8 साल तक चल रही है। बट जहां हम एक्सपेंसेस और अपनी इंक्रीमेंट्स बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हमारी इन्वेस्टमेंट को भी हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाते जाएं? So somewhere I think that top-up option which has been implemented by mutual fund companies gives an advantage to an investor to achieve their goal faster and within much convenient way. It also beats inflation much comfortably. When I say inflation, definitely हमने जो inflation बात करी goal base पे retirement के हिसाब से कि हमने 50,000 रुपया अगर आज घर का खर्चा है, 20 साल बाद वही चीज 2.5 लाख रुपया होगा. Now for achieving that goal, I need to accumulate a much larger wealth fund which can give me at least 5% kind of a return, so that I can have that 2.5 lakh rupees as a monthly expenditure, so that मैं अपना standard of living same maintain कर पाऊं. This beats an inflation as well, because आप comfortably काफी जल्दी उस चीज को अचीव कर लेते हैं अपने टारगेटेड गोल को. Thirdly, it align your saving with your income in increase. So somewhere I think, as I gave an example, expenditure increase हो जाता है, income increase होती है, saving को भी increase उसी percentage से करना चाहिए, so that you are achieving your goal much faster. And most importantly, it's an operational easy. You don't need to come to HDFC securities to submit a form. It's just in one click while doing an investment कि हम step up कर दें, top up कर दें. So it helps to create a much faster. आज आपने 5,000 का किया है, अगले साल से वही चीज 5,500 से डेबिट होना चालू होगी आपके अकाउंट से, और वो वेल्थ क्रिएट करने में आपको ये सहयोग करेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड. ये हमने एक एग्जांपल लिया है टॉपअप का, जहां हमने देखा एक इन्वेस्टर जो सिर्फ 5,000 रुपए हर साल हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है, उसने टोटल मिला के अगर अज्यूमिंग 9% का रिटर्न भी हम लगा रहे हैं, 25 साल के अंदर उसने 15 लाख रुपए लगाए, उसका टोटल फाइनल कॉर्पस 25 साल के बाद सिर्फ 53 लाख रुपए ही बना. और वहीं पर हम एक इन्वेस्टर देखते हैं जो 25 साल के अंदर 59 लाख रुपीस लगा चुके हैं, बिकॉज उन्होंने 10% टॉपअप किया. डेफिनेटली उन्होंने एक 45 लाख रुपए 44 लाख रुपए ज्यादा लगाए, बट जो उनका कॉर्पस जमा हो गया वो 1 करोड़ एक्स्ट्रा जमा हुआ. And that is what an investor wants, to generate a higher returns, higher portfolio for their well-being for a longer period of time. So that gives an opportunity. Besides SIP, we should consider SIP top-up as well. So that was it. Basically, this is the most important thing, the tool which any individual investor can look forward for investment through the SIP, through HDFC securities on their platform, on their portal, where they can invest SIP as well as in top up. एक छोटा सा और 2-3 मिनट लूंगा, then we can open up for an question and answer. But when we talk about an taxation part, taxation के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो एक brief है. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो टैक्सेशन है वो है लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर एंड शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर. कोई भी इन्वेस्टर अगर 1 साल के ऊपर इन्वेस्टेड रहता है उसको सिर्फ 10% टैक्स पे करना रहेगा जितना भी गेन्स होगा, और इन्वेस्टर अगर 1 साल के पहले अगर रिडम्पशन करते हैं उनको 15% करना है. बट फाइनेंस मिनिस्टर ने और पॉलिसी ने टैक्सेशन के एक हमें ना बेनिफिट दिया हुआ है कि पूरे साल के अंदर म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इक्विटी में अगर हम 1 लाख तक का गेन करते हैं वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है. 1 लाख के ऊपर जो भी गेन होता है उस पर 10% का हमें टैक्स भुगतान करना पड़ता है गवर्नमेंट को. Yeah, and this is not falling under any kind of an tax slabs. This is in standard 10% for a long term, and short term it is 15% on equity mutual fund and equity stocks as well. It's the same one, and it is combinedly done as per the PAN card by the income tax. And on the debt side, there is a taxation which is right now changed recently, especially after 31st of March.
where any investment in the debt funds which is done, which is having a less than 35% of an equity, will fall under the income, will be falling under the income of the slab, income tax slab holder. So that will be like fall under the income tax slab. And any investment in the mutual fund within the debt category which is having more than 35% and less than 65% in equity, that will fall under the debt taxation, which gives a benefit of indexation as well. कि आप 3 साल तक रखोगे तो आपको indexation का benefit मिलेगा, और अगर 3 साल से पहले withdraw करते हैं कोई investor तो उनको एज पर स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना है. सो म्यूचुअल फंड में आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं. आप अपने रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, समय के हिसाब से, कितने समय तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अपने एडवाइजर जैसे HDFC सिक्योरिटीज के एडवाइजर्स हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, so that they can make your plan for an investment for a long term to create a wealth. Not only to look forward for a small term goals, but a long term goal, because SIP equity investments are the only investment avenues which can create a long term wealth for an investors. Now most importantly, you have a different asset classes in the India which are available, whether we talk about gold, real estate, FDs, equity, debt funds. but अगर आप returns देखें तो कोई भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड के नजदीक, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के नजदीक तक नहीं आ पाता इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स. बट इक्विटी में जरूर है कि आप जब इन्वेस्ट करें तो आपको अपना रिस्क कैपिटलाइजेशन जरूर देखना होगा, रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर करवा लेनी चाहिए, बिकॉज इक्विटी शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन दिखा सकता है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इक्विटी जैसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पर आपका वेल्थ क्रिएट हो सके. So that was from our side, from SBI Mutual Fund, Vishal, Udasi side. And if anything else is to be added, I'll request Devekar or Omkar to add, or otherwise we can open the session for question and answers if there are any questions from the audience. Thank you, Vishal. Thanks a lot. Very nicely, you have covered all the things. Like, yes, SIP plays a very important role. The very first thing is step up SIP, we can say, because normally what happens is, like, if we'll do SIP, we believe that we already have SIP, but adding more SIPs is very much required, because as and when you grow in your professional life, definitely salary increases. At the same time, your investment should also increase, so that we can create a good corpus which would be required in the near future. That is one. Apart from that, yes, so there are many things. If you'll start early, definitely there is an added advantage. So I'll request all my investors to start SIP as soon as possible, because longer the tenure, better would be the benefit that is there. Now I think we are done here, so the forum is open for question and answer. So if there'll be any question, please write it on the chat box. Definitely we'll take the question from there and we'll address the same. So if there's any question, please write it on the chat box. We'll take that. So we have few questions, Vishal. So should the SIP be done on daily, weekly, fortnightly, or monthly basis? What is the right way? Okay, so we covered one slide which was telling about the timing. So timing is not possible in investment. It is a time which you should be spending in the market. So definitely it depends on an investor. He can do a weekly SIP also, monthly SIP or quarterly, but depending how long he wants to invest, that will create a wealth. Okay, we have another question, like should SIP be done for NFO, or lump sum investment is only advisable for NFOs? Okay, see, you have to look into the objective of the fund. So there are, the SEBI has done one of the most beautiful thing when we look into it in the recent time. There we have done the categorization of the products. So accordingly, you have a large cap funds, mid cap funds, small cap funds, you have thematic funds, multi cap funds. According to your risk profiling, according to your target. जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं अपने व्यूज दे रहा हूँ ये चीज के लिए कि अगर मुझे 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, so I know mid caps will be a better option. 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना, स्मॉल कैप विल बी अ बेटर ऑप्शन. एनएफओ में इन्वेस्ट करना, दैट इज लाइक पीपल टॉक अबाउट दैट कि 10 रुपए का एनएफओ है, आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई आर द एक्चुअल एनएफओ इज इन्वेस्टिंग, उसका थीसिस क्या है.
So accordingly you can take a call. So I'm not saying NFO is wrong or right, but it is an objective of the fund. Accordingly it should be aligned to your objective and your goal. Then only you should invest into that particular fund. Agree. Right. So yes, as per Very the famously requirement, said by Warren Buffett. I'll just take one more minute, sir. Very yeah, famously said by Warren Buffett. He is one of the gurus in the investment. That we don't have to be a smarter than the rest. हमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है. आप जितने भी अगर आप खिलाड़ी बोले ना मार्केट के अंदर जो पैसा बनाने की बात करते हैं, एक्चुअली ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं बनाता. ये जीरोधा की रिपोर्ट है. It's only the people who make money who are disciplined than the rest who have been invested for a longer term. Those are the people who are making money. So somewhere I think this quote of Warren Buffett, we always quote put that greed and fear wala. But this is the most important thing, that you should be a discipline, and discipline comes when you start doing an investment on the regular basis. agree. True. We have some more questions, Vishal, Yeah. so I'll read one by one. So there is a question like, what would be your advice for retired persons, like whose regular goal are fulfilled, but he want to create decent amount as emergency fund? So what would be the suggestion over here? Okay, if I am assuming my understanding that the retired person is already retired, right? So he should consider investing his corpus into an debt funds or balance advantage funds where he can do an SWPs. SWP is like an SIP where you can do an systematic withdrawal plan. Because what happens today, the most important criteria isn't returns. आप कितना return बना रहे हो? आपके पास जो रिटर्न के ऑप्शंस बचे हैं, एवेन्यूज बचे हैं, वो बचे हुए हैं. बैंक एफडी 6% 6.5% दे रहा है, उस पर आप टैक्स भरते हो. इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाते हैं हम लोग. But when we talk about an investments into an categories like equity saving, balance advantage, equity hybrid, they have a small flavor of equity which gives an upper kicker in terms of an returns, plus taxation benefit is there in terms of an equity taxation. But I'm not saying put your 100% into the same basket. You have to go with an logic of saying that okay, over the period of time मुझे ये SWP चालू करना है, रिटायरमेंट का पैसा है, सिक्योर होना बहुत जरूरी है, तो मुझे अकॉर्डिंगली मेरा एक पोर्टफोलियो बनाना होगा. In that scenario, my emergency fund, when I'm talking about, and this not only applies to a retirement guy, it also applies to anybody who is working also at the age of 30 years, 35 years also. Everybody should have an emergency fund for the next 3 to 4 months of their expenses. The reason is कोई भी मुसीबत बोल के नहीं आती, तो उस हिसाब से आपको एक अपने लिक्विड फंड या इमरजेंसी फंड जिसे हम कहते हैं, वो डेफिनेटली आपको है ना साइड गार्ड करके रखना जरूरी है. And that applies to not only retiree but also an overall investment community, any individual. But for retirees, retirement guys who had already completed their investment thing and they had made the corpus, they should look forward for an investments into a little debt side where the regular income should come, or an equity hybrid or equity saving categories or balance advantage funds where the little conservativeness is there in terms of an risk side, and they can take an advantage of tax benefit as well. Okay, yeah, that is there. Then, yeah. Should the SIP of shares more lucrative or SIP mutual fund? Can you please suggest top names to invest in? So completely two different things, because SIP in share, if I'm doing it, I have to understand that company. As I said, portfolio diversification is most important thing. हमें वो company के बारे में जरूरी है, हम उस company में जिसमें invest कर रहे हैं, whether I will be able to buy that company at that particular price. I have to track that every company's reports, so that I am not tomorrow any company can have a bad day, it can go down. So अगर मेरे पास उतना समय है, मेरे पास उतना expertise है, I can look forward for those things as well. But on the other side, SIP in mutual fund makes sense because it diversify your portfolio. You have minimum 30-25 stocks in any of the funds. आप अपना वो 5,000 रुपया भी लगा रहे हो, तो आप इकोनॉमी आप इसमें एक 5,000 रुपए से आप वो 25 कंपनियां खरीद रहे हो, तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है, आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है. बट ओनली थिंग इज योर गोल इज मैच with the alignment of objective. That is most important thing.
तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ आपको खुद का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, दूसरी तरफ आप एक फंड मैनेजर पे डिपेंडेंट रह रहे हैं। फंड मैनेजर इज डूइंग हिज जॉब pretty decent because you look into it in the last 10 years, the worst performing fund in SIP has also delivered 10.5% returns. So I don't want to quote the name of the fund, but yes, the worst performing fund in the industry has given 10.5% returns. True. Yeah. Uh, if the horizon is 5 years, there is a question like if the horizon is 5 years, what would be the best mutual fund according to you? Which scheme would be better? Sorry, come again. I didn't got it. Sorry. So how we select best mutual fund for next 5 years? Okay, next 5 years, how we select? So accordingly, if I go with a thesis of time period, so I personally suggest, this is my views, I personally suggest if somebody wants to come up to 3 years, he should look forward for balance advantage fund or equity hybrid category. Anything above 3 years, up to 5 years, investor can look into it in large cap, multi cap categories. They should invest. Anything above 5 years, you can consider mid cap. बिकॉज आप एक टाइम दे रहे हो, बिकॉज आप जब वो टाइम होराइजन का ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हो तो आपको नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं दिखती। सो 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू कैन कंसीडर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस कैटेगरीज ऑफ द म्यूचुअल फंड, or even a mid cap if you can stretch little ahead of 6 years kind of a period. 5 to 6 years mid cap can also make sense. Agree. So longer the horizon, like you can go for small cap, mid cap if the horizon is very long. Absolutely. Definitely. So this is the concept which we should follow. That should be there. Right. What is the maximum age for investor? So there is no maximum age, so there can be an investor at the age of 70 years. He is having say 50 crores in his account. He can still invest into in the equity part with an aggressively 90% of the portfolio because उसकी जरूरतें कम है, वो सिर्फ 4-5 करोड़ अपना डेट में रख के 45 करोड़ इक्विटी में डाल सकते हैं. So it all depends on your portfolio, how the portfolio has been constructed. So there is no upper age. Even a person within 80 years, 90 years can invest into a mutual fund or equity. Yeah, true. So if NAV of one SIP is down at particular moment, can one purchase certain units for the particular SIP scheme? So I think lump sum is the option wherein if you believe that yes, if your NAV is convictions down. are very high for that fund and you want to create a wealth and SIP आपका चल ही रहा है, साथ में अगर आपको लगता है आज मार्केट अपॉर्चुनिटी मिला है, आज मार्केट करेक्ट हुआ है, आप एक 500, 1000, 2000, 5000 रुपए का एडिशनल बाय कर सकते हैं उस दिन के अंदर. True, agree. So basically, according to me, what I've seen is like if you have a proper portfolio wherein you have chosen some good schemes, and if there is some correction, a good correction is there, definitely those schemes would be the one which will do definitely good. We can add some lump sum amount as and when we get that corpus with us. Yes, the corpus has to be there. So any participation in equity market has to be like more than 3 to 5 years of horizon. So then only we can see a good returns that is there. Can SIP be done in minor's name? Yes, you can do an SIP in the minor's name, and the amount has to come from the guardian, and guardian has to be either a biological guardian or an court appointed guardian. उनके पैन नंबर यूज होगा, so it will be minor represented by guardian. SIP उनके नाम पे चलती रहेगी और पैन नंबर जो होगा वो गार्डियन का यूज होगा. You can do an investment through the guardian's account, or even if you can open an account of minor, it will be great. Minor के account से भी SIP हो सकता है. But while getting the maturity amount, the amount has to go to minor's account only. So at that point of time, you have to open the account of minor. But yes, minor can do an investment through SIP. And that is the most important thing. In fact, whoever has asked this question, this is a pretty logical and most important question to create a wealth for your children, for your kids, for the purpose of education. As we discussed, education cost is increasing day by day. So somewhere I think जैसे ही कोई बच्चा है 3 साल का, 2 साल का, हमारे पास उनके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली चालू की जा सकती है. And that helps to create a wealth for an investor. That's why there are so many products which are there with mutual fund, like an SBI. We have SBI Children's Benefit Fund, specific targeted to children's only, to create a long-term wealth for them. Yeah, agree. So we have another question, Vishal. So please name best AI or digital theme based fund from SBI Mutual Fund House.
So Do we have okay, any scheme which is like so more into see, as digital? I specifically AI or theme based, I will not say. So we have technology fund, which is an sectorial fund, technology opportunity fund, which invest into an IT segments. So definitely sectorial fund are the funds which are like more riskier. These are the funds where the investor has to be in more upward in terms of a knowledge, in terms of and when to exit. So these are the tactical calls where an investor can take during that period. But long term creation of wealth, if somebody is looking, so I think आपके पास diversified बहुत सारे product होते हैं जहां आपका IT segment के stocks लिए जाते हैं, because any portfolio which you take, whether it is a mid cap, small cap, large cap, you will always find couple of sectors which will be predominantly there, whether we talk about consumer durables, we talk about IT, we talk about pharma, we talk about banking and NBFCs. ये सारे के सारे 15-20% तो रहेंगे ही पोर्टफोलियो में. सो अगर मेरे पास इतना एक्सपर्टाइज नहीं है कि कब एग्जिट करना है, तो मैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर रिस्क उठाने से बेटर है मैं डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ही ले लूं. True, because if you see, like fund manager has the option, and they increase and decrease the sector which they believe will perform well over the period of time. Correct. So they are doing their analysis according to that. They are just adding and removing scripts from the Correct. portfolio. Correct. So we have a few more questions, Vishal. So the question is, I'm very new for starting investing. Can you please suggest which app is good to start investing in SIP? So application wise, yes. So HDFC Securities app, InvestRight is Absolutely, best app. no doubt. No doubt So in I that. think you can start your SIP from there. Yes, as you are saying, like new for starting investing. Yes, this is one of the good app wherein you can invest in many options, whether it is scrape, whether it is mutual fund. So all the options are available. So you can start from there. If we invest lump sum amount, then what we choose? The question. If we invest lump sum amount, what should we choose? So that is an starting of the investment journey, right? So I will suggest, as an investor, if my time horizon is say 2 years, 3 years, and I want to put in lump sum, I should start testing the success through the index funds or large cap funds, because these are the more conservative in nature. बड़ी कंपनियां हैं जहां हम निवेश करेंगे, गिरेंगे कम, तेजी में भागेंगे भी अच्छे से. So I think large cap makes sense when an investment journey is done and investor wants the equity flavor in their portfolio. So they should start considering index fund or a large cap fund, which can be a blue chips of the world, where they can look forward for investment. Yeah. So what fund should be selected for horizon up to 2 years? There's another question from one of the investor. So I think what Vishal told earlier, like if the horizon is a little less, then debt fund and hybrid fund. So that is the category which you can look at. Correct. If the participation is there in equity market, yes, normally the suggestion would be 3 year plus should be the horizon. Even in hybrid category, there is certain portion which would be there in the equity market. So if the horizon is very less, I think that is the option wherein you can park your money for the shorter horizon. And if I'll tell about India, the market, the way the India is growing, and if you'll see, there are many articles which is in favor of India. So if definitely if the horizon is 10 years from now, if anybody who's just started investment and who started his career, her career, so I think if you start now, definitely after 10 years, you'll say, yes, what investment which I've done 10 years before is like was a fantastic. So most of the things are in favor of India. Definitely investment at this point of time will fetch us good return. Is part redemption allowed while SIP is in progress? You can redeem, but one thing which you have to keep in mind is like every installment should complete at least a year, because if you are redeeming any installment which has not completed 1 year, there'll be exit load if it is equity, and there'll be like short-term tax. So these two things you should keep it in mind, and basis that you can redeem if the amount is required.
Normally, suggestion, Vishal, what would be the suggestion? Like, according to me, I think if you are starting SIP, it has to be like we should not redeem it. We should just increase it. What we say Right. normally. Correct, Vishal? Absolutely, absolutely, completely agreed. I mean, until and unless we don't need, because this isn't money which we are putting for a long-term wealth creation. So हम वो compounding का benefit गवा देंगे अगर हम 2 साल बाद redeem कर रहे हैं 3 साल बाद. As you rightly mentioned, we have to consider that every installment has to complete that particular period. Completely agreed. True. So one more question we'll take. So one last question is like how we decide it is the right time to invest when market is high. I think you have covered it, and if you can reiterate the same thing, please, See, Vishal. there is no highest point when we talk about any kind of a news like market is all-time high. We say all-time high so far. ये ऑल टाइम हाई सो फार मतलब आज वो 65,000 के लेवल पे है तो आज तक वो ऑल टाइम हाई है. हो सकता है 2 हफ्ते बाद है ना 68,000 के लेवल पे आ जाएगा, वो भी ऑल टाइम हाई सो फार होगा. बिकॉज इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज rightly mentioned by sir that it's very much impacted. We don't know how the next 1 year the elections are going to come, but over the period of next 10 years definitely India's story is remaining intact. India is the only economy which is going to grow within 6% plus GDP. Your per capita income is increasing, your PLI schemes are getting implemented, your GST collection is increased, your dollar pricing has increased. So somewhere I think we are in a very sweet spot. All time high wala concept koi baat nahi kare to better hai. It's going to be an all time high in the near future also. Journey कितने समय तक हम invested रहते हैं, that is important. So the time in the market is most important thing rather than being in timing the market at any point of time. So I will suggest whatever we have a time horizon, we should align our investment journey with an objective of the fund, and we can start looking forward for an investments in that schemes. Yeah, one more question. Like, what is growth and regular fund? So I think the question is a little different. It has to be what is direct and regular fund, and what is the percent difference in benefit in both similar kind of schemes. Okay. So yeah, you want to take this, Divakar, or shall I? Yeah, I'll take it first, then you can add. So basically, direct and regular, yeah, there is a difference. Percent would be the difference, which I can say is uh, uh, in the regular fund, definitely it will be through broker, and direct is a scheme wherein you have to go to the MC and get the transaction done. What difference it would be? Definitely, direct is a good option if you can give time to your investment. Basically, everybody is busy in their own work. So if I'm working somewhere, definitely I cannot give much time to the market and to my portfolio. If you have enough time wherein you can give it to the investment, definitely that is a good option. But the good part over here, wherein like if I talk about HDFC securities, wherein you have the relationship manager. So even if you are busy, you'll be getting a call from our representative. So they'll call you, they'll tell you, okay, this is the scheme which is not doing good. This is the one which may do good. So all those things, once you get a call in your busy schedule, so you'll get a time to look into your portfolio. But if it is direct, definitely, you have to take care of your portfolio. That is the one. See, it's a basically you get a lot of knowledge in terms of an product updates, in terms of an right kind of an product which will work in the near future from an broker or a distribution house like HDFC Securities. So definitely they have a team which suggests the product and they do an analysis on those basis. The product, there are more than 6,000 funds which are available in the market, which suits your requirement can only be guided through a distributor or a HDFC security or any broker, because their expertise lies in that. So definitely you have both the worlds. One, you have a direct, you have a regular. Regular के लिए जब आप आते हो तो आपको ये benefits मिलते हैं. Second, you use their platform which is more ease of doing a transaction. So that gives a lot of comfort in terms of purchase, in terms of an withdrawal at any point of time. So these are the benefits when if we can spend that 0.5% extra, I think we can take these advantages from the broker side as well. Yeah. I think we are done with all the questions and answer all the questions, Vishal. And again, I would like to thank each participant who has joined us and participated in this webinar. And thanks a lot, Vishal, for a wonderful insight which you have shared with all of us. Thank you. Definitely help us to create a good
portfolio, and it will help us Thank you to so much. create a good corpus. So thank you everyone. Thanks Vishal, and Thanks. have a great time everyone. Thank you everyone for joining in. It was pleasure being here. Thanks HDFC Securities team for giving this opportunity. We may end the call. Thank you. Yeah, thank you. Bye.